Welcome to all of my students. Now we are discussing the chapter linear regression of ISC class 12, and we are following the books of AGGARWAL. Now we are going into the question number 23. The following table shows the ages and systolic blood pressure of 12 women. Ages is represented by X and pressure is represented by Y of 12 women, that means N equal to 12. Here is the table. 56 aged women का blood pressure 147, 42 का 125, such. Now find the correlation coefficient between X and Y. Correlation coefficient between X and Y. That means correlation coefficient क्या है? Regression coefficient. Correlation coefficient between X and Y means R निकालना होगा. R, which is equal to root over BXY into BYX. Okay, and determine the least squares regression line of Y1X and estimate the blood pressure of a woman whose age is 45 years. Here is three questions. Number one, the correlation coefficient between X and Y. And here is also given the table, and from this table, because we have to find out the correlation coefficient between X and Y, which is represented by R, and whose equation is R equal to root over BYX into BXY. Okay? Then if we want to find out the BYX, then we have the requirement of what? That is क्या है? BYX, requirement of sigma XY, N, sigma X, sigma Y, sigma X square and sigma X का whole square. तो क्या मतलब which will be requirements our sigma XY, sigma X, sigma Y, sigma X square. Clear? Now, at first, we have to find out sigma X. That means sum of all X's. Sigma Y, sum of all Y's. Sigma X equal to 628. Sigma Y equal to 1684. Mean X. What does it mean X? Mean X means sigma X by N. 628 by 12. The number of head equal to 12 women. That means this is the sigma X. Mean X. Mean Y, sigma Y by N. That means 421 by 3. Okay. Bas. Now X square. X square means X 56, 42. 56 का square means 3136. 42 का square means 1764 and such. This is the X square. And after that we have to create Y square. Y square means Y means 147, 125, 160. Therefore 147 का square means 5232, 5250, 125 का square, such. And therefore the sigma Y square equal to 238817 and sigma X square equal to 34416. Sum of all X squares, sum of all Y square, and also we have to create XY. XY means X into Y. That means X क्या है 56, then Y 147. That's why the multiplication of 56 and 1 into 147 means 8232. And after that 42 into 125, 5250. Clear? X into Y, XY. ठीक है? तो sigma XY equal to 89894. बस हो गया. Therefore the correlation coefficient between X and Y are equal to root over BYX into BXY. BYX into BXY. Now then we have to find out the BYX. R equal to BYX, sigma XY, XY निकल गया. R equal to BYX, that means N into sigma XY minus sigma X into sigma Y by N into sigma X square minus sigma X square whole square
Now we have to put at the place of sigma xy, sigma y, such, all have to be put it here, and after calculation we get, through the calculator we get 1.1380. This is the byx, and similarly bxy क्या होगा ना, same formulas है, but upon y, on y, and that's why at the place of denominator you have to use y, n into y square sigma whole square. All figures are known previously and also previously calculated. Put these figures and we by calculator we get 0.7070. Clear? Now r equal to की the क्या है, correlation coefficient का फॉर्मूला क्या है, r equal to root over byx into bxy, that means into 0.8969 answer. Clear? Okay. Thank you. Next, here is the first questions. Find the correlation coefficient between x and y. It is solved. Okay. Now, second part. Determine the least square regression line of y on x. That means least square regression line the regression line of y on x. Okay, determine the least square regression line of y on x. Least square regression of line means regression line. Least square regression line and regression line both are same. Okay. The regression line of y on x is y on x, mind it, y on x. That means you have to create the equation through making a subject of y minus y bar equal to byx. There is a y minus y upon x, that means byx, x minus x bar. But we know that everything's previously already we have calculated the all things, x bar, y bar, x square, y square, etc. So therefore at the place of y bar we have to put 4 to 1 by 3. तो ना प्रीवियसली हमारा कैलकुलेशन है, देखो एक्स बार यहाँ पर क्या है, एक्स बार देख लो क्या है 157/3, वाई बार 421/3. Clear? Now we have to put this put करो. After calculating this we get y equal to 1.138x plus 80.78. This is the answer of second questions. Least square regression line. Okay, बस क्लियर हो गया, यही आंसर है. Now question number 3, estimate the blood pressure of a woman. Blood pressure means y. Estimate the blood pressure. Estimate the blood pressure. Blood pressure क्या है ना, हमारा y है, blood pressure y है, of a woman whose age is 45 years. एज क्या है, x है. एज क्या है, x है. ठीक है, x years. पहले we have to find out when, we have to find out y when क्या, when x equal to 45 years. तार माने we have to use the equation y dash equals to 1.138x, where is in that equation where y is subject and bar second part is the predicate, and that's why y equal to 1.138x plus 80.78. This equation will be used, and where at the place of x we have to put 45. After calculating this we get 131.99. 99 means 1, that means 132. So the blood pressure of blood pressure is 132 when the age is 45 years. Clear? Third question. Now question number 24. 24 क्या बोल रहा है? The following table shows
the final grades of 10 students in algebra and physics. Algebra represented by X and physics represented by Y. Here is the algebra 75, 80, 93, this. And also physics will be this. Clear? Table shows final grades of 10 students in algebra and physics. फर्स्ट स्टूडेंट का जो एक नंबर स्टूडेंट है, जो नंबर 1 रोल नंबर, उसको मिलता है 75, 82. सेकेंड रोल नंबर 80, 72. अलजेब्रा में 80 मिल रहा है, फिजिक्स में 78 मिल रहा है. तो ऐसे ऐसे टेबल है. ऐसा ऐसा टेबल है. तो क्या करेगा? फाइंड द बोथ द लीस्ट स्क्वायर लाइन्स. बोथ मीन्स then you have to find out linear regressions of क्या y dash equal to byx into x minus x bar. This equation will be calculated and also इसका reverse जो है x dash when x is used by at the place of key subject, x dash equal to bxy into y minus y dash. ये दोनों इक्वेशन निकलना होगा. देखो दोनों इक्वेशन निकलना होगा. दोनों इक्वेशन निकलने के लिए एक्स बार वाई बार सब निकलना चाहिए. तो इसको ऐड करो और 10 से डिवाइड करो तो एक्स बार मिल जाएगा. वाई को ऐड करो वाई बार मिल जाएगा. बस ठीक है. बी एक्स निकलना होगा. बी एक्स के निकलने के लिए एक ही तो फार्मूला था. क्या फार्मूला था पहले यूज़ किया था? बी एक्स का फार्मूला क्या है? सिग्मा. याद है क्या फार्मूला यूज़ किया था बी एक्स का? देखो क्या है बी वाई एक्स. क्या है यहाँ पर? क्या किया ना बी वाई एक्स एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एन सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. ये है बी वाई एक्स. और बी एक्स वाई क्या है? उल्टा है. सेम ऊपर पार्ट अपर पार्ट सेम है बट लोअर पार्ट यहाँ पर वाई होगा. क्यों ना? एक्स अपन वाई. इसलिए एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर वी हैव टू यूज वाई. तो एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर दोनों निकलना है. और ये जो टेबल से मिल जाएगा सब. एक्स वाई मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, जैसे 23 को किया हम. ठीक है. फॉलो क्वेश्चन नंबर 23. देन यू विल गेट ऑल फिगर्स एंड आफ्टर दैट बाय यूजिंग फार्मूला यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके. देखो इफ द स्टूडेंट्स 75 marks in the algebra, hot. This is same to question number 23 का 3, 22 का A. ठीक है. 22 का B. सब होमवर्क दे दिया हम. जस्ट कंपेयरिंग करके तुमको ये पूरा सॉल्व करना है. याद रखना. यहाँ पर हिंट्स दे दिया कहाँ पर देखेगा. देखो ऐसे ऐसे करो तो हो जाएगा. नहीं होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. जो हमारा नहीं हो रहा है तो हम तुम लोग को सेंड कर देगा, भेज देगा. सम्स पूरा सॉल्व कर दे. ठीक है. लेकिन याद रखना जो होमवर्क पार्ट जो होता है, हम जो बीच में जो होमवर्क पार्ट देता है हर वीडियो में, थोड़ा 1-2 सम्स देता है चैप्टर में, वो होमवर्क पार्ट तुमको अपने से करना है. क्योंकि नहीं करेगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा. ये सही बात है. तुम जितना देखोगे, जितना समझोगे, देखेगा एग्ज़ाम हॉल में एक भी सम्स नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि ना तुम कम किया. अकेला करना है. देखो तुमको जो स्विमर जो होता है ना, ट्रेनर जो है, तुमको बोलेगा जो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे हाथ छड़ो, ऐसे पाँव छड़ो, स्विमिंग करना है. लेकिन स्विमिंग तो तुमको अकेला करना है ना. तुम्हारा सब तो जो देखो अकेला तुमको स्विमिंग करना है. याद रखना. ठीक है. स्विमर तो तुम्हारा साथ स्विमिंग नहीं करेगा ना. तो इसीलिए जब तक ना तुम अकेला स्विमिंग सीखता नहीं तो तुम क्या करेगा? डूब जाएगा. यहाँ पर भी सेम चीज़ होता है. जब तक अकेला नहीं सम्स करेगा, कोई अन्य सीन और अनसीन, दो सम्स विदाउट टेकिंग एनी हेल्प, यू हैव टू डू इट. You have to do it yourself, and after that you will get the 100% confidence into the exam hall. Otherwise, into the exam hall you will be a grade 0, because your focus will be will be sent towards your home copy in your house. Okay? And you feel yourself helpless, and that's why
You have to do yourself. You have to do yourself. You have to do yourself. My homework and also the sin and sin, both sums. Self doing work. Then you will must get your 100% confidence to do sums, and also you will be able to score 100% marks into the mathematics. Otherwise, it's not possible to get any good marks into the exam hall. You have to self do it. There, thank you.